Nalini, first of all, explain to us what are the options for the Muslim side. This, of course, is a win for the Hindu side, but they do have the option. The Muslim side does have the option of challenging this, isn't it? How does it move forward from here legally? Well, absolutely, Sneha. In fact, this order has been passed by the Varanasi District Court, which has been in favor of the the Hindu petitioners, I beg your pardon, who were asking to be allowed to offer prayers in the basement of the temple. But at the same time, you're right, the Muslim parties do have the option of challenging this order before the Allahabad High Court. But what's important to observe is as to whether or not the Allahabad High Court is going to grant an immediate stay on this order. Because in case a stay is not granted, and because the Muslim side will also have to move a little expeditiously to try and get this order stayed, because there is a 7-day deadline that has been given by the Varanasi court to ensure that all the arrangements are made by the district administration and that the Hindu petitioners can start performing the prayers in the basement of the temple within 7 days from now. So 7 days time is available to the Muslim side to approach the Allahabad High Court and try and push for a stay on this order, but it remains to be seen as to whether or not that stay is granted. The reason why this is such a big win for the Hindu side is because there's basement, essentially no prayers have been offered there by the Hindu side ever since 1993. It was in 1993 that the basement was locked. In fact, for the past several months, there was also a fight that was ongoing as to whether or not the keys of the basement should even be handed over to the district administration. Because earlier the mosque committee had the keys to the basement and they refused to hand it over. And the Hindu petitioners had moved the court asking for it to be handed over to the district administration, which it was eventually done. And now this order is coming at the tails of that order, where the keys were handed over, and the Varanasi court has clearly said that they can offer prayers in the basement. This is on the southern side of the mosque, where they can offer prayers. Within 7 days, the district administration has to make all the arrangements, and it remains to be seen how this case proceeds further now. All right, Nalini, be with us. I'm just going to come back to you again in a moment from now. Okay, Nalini, the fine print of the order that is in fact with us right now, if you could take us to the details of what exactly has the court said today. Well, there are 3 main takeaways, Sneha, from this order that has been passed by the Varanasi court. Number 1, it says that the Hindu petitioners have the right to offer prayers in the basement of the temple. Number 2, it says that all the necessary arrangements need to be made by the district administration, including if there are any idols or anything that need to be installed in the basement to allow them to carry on the prayers, then that needs to be done. And the third and the most important takeaway is the deadline that has been imposed by the Varanasi court to ensure that this is done in an expeditious manner. Also, Vishnu Shankar Jain, like we were speaking to just now, also clearly said that the ASI report played a very crucial role in this order being passed. Why is that, Sneha? Essentially because the ASI report had categorically said that in the southern पूजा पाठ तुरंत शुरू होनी चाहिए और देखते हैं आगे मामला कैसे बढ़ता है। बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे, कैविएट दाखिल आगे मुस्लिम पक्ष जो हाई कोर्ट जा रहा है, क्या तैयारी है? हम लोग भी हाई कोर्ट जाएंगे और कैविएट फाइल करेंगे। हम भी हाई कोर्ट जाएंगे और कैविएट फाइल करेंगे। विष्णु जी, क्या पूजा पाठ हो गया? फिर लगाएंगे, अभी रुक जाइए। I'm going to go straight back to Samarth, who's joining us for the very latest on that. Samarth, give us a sense of what the petitioners also, like you were telling us, are extremely happy. In fact, some of them came out and said that, this was ours. We were worshipping here at the basement, or we were worshipping or praying here at the basement for years together now, and suddenly that stopped in the year 1993. Samarth. Well, exactly. That's a big case, and also the Hindu side advocates are claiming that they were also going to file the caveat. Caveat भी दाखिल करेंगे आप लोग, क्या कुछ प्रक्रिया? बिल्कुल, हम लोग भी कैविएट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब चूंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो सूचना आई है, उन्होंने कहा है कि हायर कोर्ट यानी हाई कोर्ट हम उच्च न्यायालय जाएंगे और वहाँ इस आदेश के फैसले के खिलाफ हम जो है वहाँ दाखिल करेंगे, जिसके खिलाफ हम लोग का भी कैविएट वहाँ। So you can clearly see that they are going to file the caveat with them, and you can clearly see I also got the Vishnu Shankar Jain with me, and I also try to speak to them, and you can clearly see the visuals out here. Around the visuals, a lot of people out here. So हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी मौजूद है। विष्णु जी, बताइए दर्शकों को क्या कुछ हुआ है आज के केस? देखिए, जो व्यास परिवार का तहखाना था, उसमें नवंबर 1993 तक पूजा हो रही थी। उस पूजा को एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए उस पूजा पाठ को रोक दिया था। आज डिस्ट्रिक्ट
आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने यह आदेश पारित किया कि वहाँ पे नियमित पूजा पाठ स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ करे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कहा है कि आयरन फेंसिंग में अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स करके वहाँ पे पूजा पाठ शुरू की जाए। नंदी जी के सामने एक रास्ता बनाया जाए जिससे पैसेज क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष है उनको एक सेपरेट एंट्रेंस मिले और उस एंट्रेंस के माध्यम से वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट हो। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो हायर कोर्ट जाएंगे। वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे हायर कोर्ट्स में, और कैविएट हम फाइल करेंगे कोर्ट में। जैसे ही वो जाएंगे तो हम भी वहाँ पे, वो हमें भी वहाँ पे पाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है दलील आगे किसकी चल रही है? देखिए, हमारा केस बहुत स्ट्रांग है मेरिट्स पे, और अगर हमारा केस मेरिट्स पे स्ट्रांग नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करती। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को जीतेंगे। तौर पर और क्या कहा गया था ऑर्डर में? जो लिखित तौर पे है वो मैंने आपको बता दिया कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को वहाँ पूजा पाठ स्टार्ट करनी है, 7 दिन के अंदर स्टार्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आयरन फेंसिंग में अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करने हैं, और जो पूजा पाठ हो रही थी उसी को रेस्टोर किया। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर ये लोग इसी 1-2 दिन में हाई कोर्ट जाते हैं, आला कोर्ट में जाते हैं, तब क्या प्रक्रिया रुकेगी 7 दिन वाली जो है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कोर्ट इसको स्टे करेगी। ये लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ आदेश है, इस केस के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उससे जुड़ा हुआ आदेश है, और इस पे कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। निकलते हुए विक्ट्री सिंबल भी दिखाया। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए विक्ट्री का दिन है। और जो जस्टिस के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर के केस में ताला खुलने का आदेश दिया था, जो राम मंदिर के केस में मील का पत्थर बना था, उसी तरह से मैं आज के इस आदेश को देखता हूं, और ये इस केस में मील का पत्थर साबित हो। बड़ी जीत है आप लोग के लिए। तो ये थे हमारे साथ विष्णु शंकर जैन, उन्होंने साफ बताया किस तरह से मील का पत्थर साबित होगा। तो ये बड़ी बात है, और इससे साबित हो रहा है कि अब देखना यह है कि मुस्लिम पक्ष के वकील हायर कोर्ट में जाते हैं तो क्या ये आदेश जो 7 दिन का है इस पे स्टे लगता है या नहीं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक।